Alright. I got the city on my back, yeah. I got the city on my back, yeah. Looking through the streets up in the snap, yeah. Eating all these rappers as a snack, yeah. Buy myself a super, polo skinny supers. Cruising through the city, bumping lean do it. Scrupulous tension, no detail, retail product is perfect. This game is jungle, I'm the lion, the rest of your servants. Bang gang, too cutthroat. Flexing on them without moving the muscle. 24 karat gold round my neck like I'm Kobe. Waist ass youths running up like they know me. Oh please, you boys greener than some snow peas. Splitting murder fiend shit, splitting hairs with it. I decide making pics, you gotta hedge with it. Yeah, with it or I'm winning cause I'm blessed with it. Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So today I'm gonna install few things on my bike because मेरे बाइक जो है 5-6 महीना हो गया है लिए हुए. तो 5-6 महीनों से जो है मैंने स्टॉक में ही चलाया है, अभी तक स्टॉक ही है बाइक. तो आज मैं कुछ मेरे बाइक पे मॉडिफिकेशंस वगैरह करने वाला हूँ, जैसे कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालने वाला हूँ और टेल टाइडी करने वाला हूँ. तो सिंपल मॉडिफिकेशंस वगैरह करने वाला हूँ आज. और मैं आज कौन सा एग्जॉस्ट डालने वाला हूँ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ. एग्जॉस्ट जो है मेरा पुराना ऑलरेडी है, LeoVince Cobra बोल के. तो ये जो है मेरे बहुत पुराना एग्जॉस्ट है, मतलब R15 में डाला था मैंने. तो अभी जो है मैं निंजा में डालने वाला हूँ. एग्जॉस्ट जो है ये डालने वाला हूँ मैं, LeoVince Cobra का है. 3 इयर्स पुराना है ये, पहले R15 में डाला था. और ये जो है मिडल पाइप है, ये एक्चुअली R15 का ही है. तो इसको मैं थोड़ा काट उट करके लगाने वाला हूँ. ये बैफल है. अभी मैं बाहर पहले मैकेनिक के पास जाऊंगा, उसके बाद वहाँ पे आपको मिलता हूँ. सो ऑलराइट गाइस, तो अभी बाइक जो है कुछ इस तरह है. मतलब मैंने यहाँ का नंबर प्लेट जो था वो निकाल दिया है. अभी यहाँ पे लगाने वाला है स्टिकर नंबर प्लेट बना के. और पीछे का टेल सेक्शन पूरा निकाल दिया है और यहाँ पे अभी टेल टाइडी लगेगा. तो बाइक जो है इस तरह दिख रहा है, मतलब सेक्सी दिख रहा है. तो चलो अभी पहले टेल टाइडी करते हैं ऊपर जाकर और उसके बाद फिर डालेंगे एग्जॉस्ट. ऑलराइट गाइज, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपना बाइक को मॉडिफाई करने के लिए. आज देखते हैं अभी कैसा दिखता है नहीं दिखता है. अभी आपको बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स के साथ, टाइम लैप्स के साथ जो इंस्टॉलिंग वाला पार्ट है वो दिखाएगा. तो चलो. A few moments later. So alright guys, मैंने जो है एग्जॉस्ट डाल लिया है और आई होप आपको साउंड आ रहा होगा. थोड़ा सा लाउड है लेकिन साउंड जो है थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैं कुछ दिन बाद में इसमें एक और भी डीबी किलर डालने वाला हूँ. तो इसका जो है मैं साउंड अच्छी तरह से मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊँगा आपको. तो पहले अभी इसका टेल टाइडी कर लेते हैं वहाँ पे जाके.
सो ऑलराइट गाइज, मैंने कुछ फ्लाई बाय लिए और यहाँ पे कैमरा लगा के इसका प्योर साउंड, जो एग्जॉस्ट का जो प्योर साउंड है वो रिकॉर्ड करने का ट्राई किया। आई होप आपको ये जो साउंड और फ्लाई बाय था अच्छा लगा हो। और ये वीडियो बनाने में बहुत लोगों ने हेल्प किया है, जैसे कि एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी देयर आर 2 बाइक्स, वन इज GT650 ट्विन एंड अनदर वन इज RC390। RC390 जो चला रहे हैं उनका नाम है स्वराज और जो GT650 चला रहे हैं उनका नाम है सफल। तो दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि वो लोग नहीं होते तो शायद ये वीडियो का फ्लाई बाय जो था वो नहीं बन पाता। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल please don't forget to subscribe. And with that note, thank you for making me part of it. We'll see you soon in the next vlog. Till then, bye bye, take care, and Khuda Hafiz. Bye. Shit blessed with it. Mike handed from the 6 in a year. I'll be stupid rich doing stupid shit.